प्रूफ कर पाना। A lot of times हम अपने हसल कल्चर में इतने ड्रिवन हो जाते हैं, लेकिन हम ड्राइव तो करते हैं अपने आप को, लेकिन वो एनर्जी डिप्लीट हो जाती है और बर्नआउट में चले जाते हैं वर्सेस क्लाइंबिंग अप। एग्जैक्टली। सो वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है आप अपने स्पेसिफिक इंडिविजुअल वाइटैलिटी कोशेंट को समझें कि कौन कौन से रीजंस की वजह से मेरी वाइटैलिटी डिप्लीट हो रही है। क्या मेरी वाइटैलिटी अंडर नरिशमेंट की वजह से डिप्लीट हो रही है? क्या मेरी वाइटैलिटी सर्टेन कंडीशनिंग की वजह से डिप्लीट हो रही है? या मेरी वाइटैलिटी मेरी सेंसिटिविटी की वजह से डिप्लीट हो रही है? जो ड्रिवन होते हैं वो नहीं पहचान पाते कि एक्चुअली मेरी एक सेंसिटिविटी है जी, और एज आई एम मूविंग हायर एंड आई एम सराउंडेड बाय दोज थिंग्स which will trigger me, I am just bursting, I'm becoming more intense, and that intense energy outburst is making me collapse. So it is a responsibility on the self that the more higher you are moving, the more aware you are becoming of your conditionings and sensitivity, and you start to work towards that. beautiful. We are not saying you change yourself, but you need to reinvest in yourself, refine yourself. और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि है। हम हमेशा ना वी कीप एडिंग थिंग्स टू आवर लाइफ, लेकिन एट सम पॉइंट्स वी आल्सो नीड टू स्टॉप एंड सी कि व्हाट इज़ इट दैट्स नॉट वर्किंग एंड इसको रिमूव करें। Wow, that is beautiful, ji. So it is very important that you let go of deep-seated programmings जी, that you first felt earlier. उसके लिए एक word है कि हमारे convictions जो ड्रिवन होते हैं बहुत कन्विंस्ड हो जाते हैं कि यही वर्क करेगा, कि गुस्सा करने से ही काम होगा, कि फोर्स यूज करने से ही होगा. मे बी दे नीड टू क्वेश्चन दैट. राइट. It is difficult, but if you start to question yourself that is it time for me to let go of my old convictions and allow it to be replaced with better way of handling something, you will actually see that you are growing up on the ladder. ब्यूटिफुल. एंड ऑल्सो दिस आइडिया ऑफ ट्रिगर्स एंड सेंसिटिविटी, Right. कि आपको अवेयर होना कि क्या चीज़ें हैं जो आप सेंसिटिव हो, विच कुड बी फूड इंटॉलरेंस और इट कुड बी energy, weather, It whatever. can be on 2-3 fronts. It could be the air conditioner It that's can be, letting you. it can be on food. Right. What is your sensitivity on food? Second, it can be also about what is my sensitivity towards behavior. Right. Okay. कई बार डिप्लीशन का उतना बड़ा कॉज फूड नहीं होता जितना बड़ा आपके आसपास का बिहेवियर होता है. योर इनटॉलरेंस टुवर्ड्स अ सर्टेन बिहेवियर. Like, let me ask you, what in you is a specific behavior in a person which is most unacceptable, whether it is known or unknown? Dishonesty. Okay? Which means you are saying that your core value is sincerity. Right. To you, Divya ji, anything or anyone which comes across as insincere, dishonest, will immediately affect you. In that getting affected, you lose vitality. Now, is that in your control? क्या आप दुनिया के कई इनसिंसियर लोगों को सिंसियर बना पाएंगी? No, but I can ensure कि I do not Get affected, right? get affected or How? interact. How? By first knowing that wait, ये तो मेरा weakness है, while this is my biggest strength. Let's say अगर sincerity आपका core value है, which means that is your biggest strength. लेकिन whatever you find insincere around you is the trigger that can deplete you. So to not lose your vitality, you need to know you need to have a plan of how will I navigate whenever there is insincerity. Because then वो जो वर्ड यूज करते हैं ना, सेल्फ लव, वो सेल्फ लव का एप्लीकेशन का समय ही तब आता है व्हेन यू चूज योर सेल्फ दैट वेट, आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई इंटेग्रिटी हियर जस्ट बिकॉज यू आर इनसिंसियर. I will navigate through that without losing my calm, without losing my stability, without losing my emotional well-being.
Beautiful. But I think the first thing is becoming aware. Aware. of it. And making sure कि आप अपनी energy, vitality को preserve कर रहे हैं. जी. And you're moving forward to actually create that impact and that change that we all hope we can bring in our world. 100%. So, what a fantastic conversation, Dr. Saab. It's like, I started with thinking about Ayurveda, but I think for me it's a lesson in life, and I really feel कि ये ancient sciences में इतनी सारी secrets हैं जो अगर हम परखें समझें तो it can give us a completely different way of living our lives. And complete one. And complete one. A real complete one which is need of today's time and age. Right. And the generations and the people, and it's got, आप internet देख लो, AI देख लो, I feel Ayurveda या हमारे ancient sciences में सबका तरीका है कि कैसे जीना है. 500% जी. Beautiful. And thank you so very much for this opportunity. You brought up very interesting questions and through that conversations, Divya ji. Thank you.